This is Pankaj Chandrasena, Assistant Professor, CIMAGE Group of Institutions, Patna. Today is a very important topic. In this video, we can discuss how to use the alter command in a Oracle database. तो चलिए आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि alter कमांड का Oracle database में किस प्रकार से यूज़ किया जाता है. Now, in SQL, alter table statement, this is one of the statement जिसके द्वारा हम टेबल को alter कर सकते हैं. We can say that the alter table statement is used to add, delete or modify the column in an existing table. किसी भी existing table के अंदर में हम किसी डेटा को रिकॉर्ड को ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और अगर किसी डेटा ऑलरेडी है तो हम उसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं कोई पर्टिकुलर टेबल के अंदर में. Now alter table statement also used to add or drop the various constant on an existing table. ऑल्टर टेबल के द्वारा हम किसी भी टेबल के अंदर जो हमने फील्ड इंसर्ट कर रखा है उस फील्ड में हम कुछ ऐड कर सकते हैं या फील्ड को ही ड्रॉप कर सकते हैं कंसिस्टेंट उसके अंदर अगर है तो एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर. नाउ नेक्स्ट ऑल्टर टेबल ऐड कॉलम. टू ऐड द कॉलम इन द टेबल, नाउ यूज द फॉलोइंग सिंटैक्स. अगर टेबल के अंदर हमें कोई कॉलम यूज़ करना होगा तो हम इस तरह का सिंटैक्स यूज़ करते हैं like alter table underscore name or add column underscore name. There is a data type. यहाँ पे data type हम use करेंगे like a number or varchar variable characters or any type of data type. Now after that the following SQL add email अगर मुझे ऐड करना है पर्टिकुलर कॉलम्स के अंदर में कस्टमर्स टेबल के अंदर. Here we can say the command that is alter table customer, that is a table name, and after then add the email, that particular field, email field, that is called the varchar 2255. Now next, here the alter table also use in drop the column. Now to delete a column in a table using the following syntax. अगर हम किसी टेबल से कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं तो इस तरह का सिंटैक्स यूज कर सकते हैं. नोटिस द सम डेटाबेस सिस्टम डू नॉट अलाउ टू डिलीट द कॉलम. कुछ डेटाबेस सिस्टम जो है कॉलम को डिलीट करने के लिए अलाउ नहीं करते हैं. नाउ इन अल्टर टेबल there's a table name, table underscore name, drop column, column underscore name, the following SQL determination to email configurations from the customer table. For example, we can use like alter table customers, हम customer के table को alt कर सकते हैं. Now next drop the column, that particular column हम लोग यहाँ पे drop भी कर सकते हैं. After that now alter table को हम लोग और अलग तरीके से यूज कर लेते हैं लाइक रीनेम द कॉलम. अल्टर टेबल्स के द्वारा हम कॉलम को भी रीनेम कर सकते हैं. टू रीनेम ए कॉलम टेबल यूजिंग द फॉलोइंग सिंटैक्स. अगर टेबल के अंदर कॉलम को रीनेम करना है तो कुछ पर्टिकुलर सिंटैक्स को हम लोग यूज करते हैं. नाउ अल्टर टेबल और टेबल अंडरस्कोर नेम. नाउ रीनेम द कॉलम ओल्ड एंड द नंबर विद द न्यू कॉलम. तो हम रीनेम कर सकते हैं ओल्ड कॉलम को एक नए कॉलम के द्वारा. Now next alter table. Alter table also modified the data type. जैसे for example to change the data type of the column in the table we can use the following syntax. Now SQL server oblique SQL MS access alert table underscore name, that is alter column underscore name data type. Now MySQL oblique Oracle provide a version that is 10.z. Alter table table name, that is modify the column, so modify column, that is column name and their data type clearly. Now next, here we can use in Oracle 10g, that is a later version. Now alter table and table underscore name, modify the column name and data type. Now here we can see that the one of the table will be created like SQL alter table example. Look at the person table. Here the person table, they are the basic structure of the table, and the basic structure of the table here is the field of the table, that is ID, last name, first name, address, city. These are the basic tools in the IDE. Now after that we can insert the data
Now some very important condition, that is I see now. Now we want to add the column, that is the date of birth, in the person table. Now we can use the SQL statement, alert table person, add date of the birth. Notice all that the new additions, date of birth, if for the type of data is furnished type of data, is going to the health the data. The data to be specify what type of the data the column can hold. Now the following completing reference of all the data type available in MS Access, MS SQL and MS SQL Server go occur the complete data type references. Now here we can see the final table, that is a person table. We will unlock that time clearly. So change in data type. Here is the example. In Oracle we can also use in change in data type, जिसका एक example यहाँ पे हमने दिया है. Now we can want to change that the data type of the column, that is the name. So date of the birth in the person name, there is some, but we can use in the following SQL statement: alert table person, alert column date of the year. Note that the date of the birth in the column, now you can type the year and it is going to the held on the year 2 or 4 digit. Now that is a drop table. So drop command is also used in drop table, drop column, these are. Now next we want to delete that the particular column, that is the name, date of birth in the person. That table we can use in the following SQL statement: alert table in the person. Now drop the table in the table database name. Now here we can see that the particular table in the looking the value of the database. Now next, so here we can completed the theoretical part of the अल्टर टेबल. तो अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि अल्टर टेबल हम किस तरीके से प्रैक्टिकली लाइव हम ओरेकल में यूज़ कर सकते हैं और उससे क्या हम मॉडिफाई ये सब कर सकते हैं या नहीं. तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसे शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो कमेंट कीजिए किस तरह का आपको इसमें प्रॉब्लम आ रहा है. तो थैंक यू.